What are your hobbies and how do I'm you? here on a Friday at 6 o'clock. I only go back home at 10. What do you think? Is there a work-life balance? Our chief minister tells us, I Want to know think, about your hobbies and all that I as will well. tell you that. Um, See, firstly, you have to realize, like Shah Rukh Khan says in Bazigar, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So unless you figure that out, you have to. I mean, you want to achieve something, you lose something. The trade-off is always there in life. If you want to be successful at something, you have to give up something else. So therefore, I would say there's no successful person on the planet that I know of, at least, has achieved that work-life balance. And I would like to believe I'm successful. Secondly, I'll tell you, of course, we all do the same thing, man. I mean, we all watch movies. I watch Mallu movies on OTT now. I've become a huge fan of Malayalam movies on Netflix and Amazon. I have two young children, 18 and 14. See, this is what happens. Where is the work-life balance? My son is going to college now. I have to drop him in Carnegie Mellon. Is going on 15th. I have to drop him. So yeah, what happens is essentially the little time you get, you spend with the family, go to a restaurant, eat, and once in a week or at least once in 2 weeks, you meet your friends, have a drink, unwind. At least they'll keep you grounded, and watch movies once in a while. I mean, what else do you do in India, man? I don't know. Celebrate your birthday in Cochin, like I said, and that's all you do essentially. End of the day. Cheers. Yes, sir. One last question, Himanshu. Himanshu is my son's name, by the way. Who's Himanshu here? My name is Himanshu. Hi, Himanshu. Himanshu Jain. And I think we'll take a few more questions. Unless they are bored, they want me to go. मैं हूँ यहीं पे. So I work with Government of Punjab. I'm in the civil services. Sir, having passed from IIIT Hyderabad in 2014, I can see a very phenomenal. वापिस आए कभी? It's a lot of time, but I see a very different Hyderabad than what it was in 2014. So, sir, my question is ki, given the limited or budget or the public finance that is there with the departments, how do you prioritize your this budget I will spend this year on this program and I'll do this program later on? Excellent question, and this is one question I'd like to dwell on for a bit. Manshuk, really great question, because a growing country like India, एक हमारे सोसाइटी में, एक हमारे घरों में भी, हर जगह, इनफैक्ट हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ, तेलंगाना जाओ या पंजाब जाओ या हिमाचल जाओ, कहीं भी जाओ, एक हमारे यहाँ एक क्या बोलते हैं उसको, एक मेंटल ब्लॉक है. वो ये है कि कर्जा नहीं लेना है, नो डेट, डेट फ्री कंपनी, डेट फ्री हाउस. ये बकवास है, पहली बात. क्योंकि आप एक मिनट सोचो, हिमांशु आपकी क्या उम्र है? 30. आपके पिताजी का क्या उम्र है? 57. क्या करते थे और क्या कर रहे हैं? सर्विसेज में? He's a businessman. See, if you are in services, see, for example, my father's generation. Himanshu is a young guy, so I won't take his example. My father's generation and me. My father's nearly 70. I think, in his age, in his times, the dream of every person of his age or his generation would be कि मुझे घर बनाना है, बट कब बनाऊंगा मैं? जब रिटायर होऊंगा, आखिरी में पैसा बचाऊंगा और सब कुछ समेट के इकट्ठा करके घर बनाएंगे, घर बसाएंगे. दैट वाज अ ड्रीम. गाड़ी खरीदना है तब भी बहुत दिन पैसा जमा कर कर करके तब खरीदते थे. बट आज जनरेशन जब चेंज हो गया, आज क्या हो रहा है? एक नौकरी मिल गया आईटी में या बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, पहला चीज क्या करते हैं? घर खरीदते हैं. दूसरा क्या करते हैं? गाड़ी खरीदते हैं. क्या बदला? बदला ये एक्सेस टू कैपिटल बदला, हिम्मत बढ़ा. आज की बच्चों में हिम्मत है कि मेरी नौकरी यहाँ, अगर मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर रहा हूँ, वो गया भी, तो मैं जाके जेपी मॉर्गन चेस पकड़ लूंगा, मैं कमाई करूंगा, ईएमआई पे करूंगा, मेरी गाड़ी और घर मैं आराम से बसा लूंगा. सो ये जो जनरेशनल शिफ्ट इंडियंस में हुआ है, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स में नहीं हो रहा है. हम वही फिर उसी में बैठे हैं, घिसी फिटी मॉडल, जहां हम लोग बोलते हैं कर्जा नहीं करना है, डेट फ्री रहना है. क्या बकवास है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पैसा कहां से आएगा? अगर एक दुनिया की सबसे बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट करनी है तो डेट तो रेस करना पड़ेगा. डेट रेस करके किस चीज पे लगाओगे, इस बात पे ध्यान दो. इफ यू आर रेजिंग डेट एंड इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स, इट इज गोइंग टू पे ऑफ. प्लीज डोंट लुक एट इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज डेट. It is investment into the future. It is going to pay off. So this fallacy that has been created कि debt GDP ratio है, इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए,
फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट होना चाहिए, हाँ वो सब ठीक है। आज आप एक चीज बताते हैं, आपको सरप्राइज हो जाओगे। दुनिया की सबसे अमीर देश कौन सी है? यूएस। पता है यूएस का डेट जीडीपी रेशियो क्या है? 116%। जापान इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट रादर, चाइना सेकंड लार्जेस्ट। जापान्स डेट जीडीपी रेशियो पता है कितना है? 200%, 200%. You know what India's is? 59%. My state's is 25%. और फिर भी मेरी ऑपोजिशन गाली देते रहती है कि तुमने कर्जा इतना कर दिया, खत्म कर दिया। यार हमने कर्जा किया तो किसके लिए किया? हमने पैसा लगाया इरिगेशन में, प्रोजेक्ट्स पे, पावर पे लगाया, ड्रिंकिंग वाटर पे लगाया। इस सारे चीज मनी विल बिगेट मनी, wealth is multiplied, wealth is doubled, tripled and quintupled, provided you put it in the productive sectors. This basic common sense unfortunately is lacking in the Indian society and also in Indian governments. Indian government इसलिए डरता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी ये मानती है कि जिस आदमी ने ज्यादा कर्जा उठाया वो गलत कर रहा है। कर्जा करो बट प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा लगाओ, इट्स इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। टुडे लेट मी आल्सो आस्क यू वन क्वेश्चन। In Hyderabad Metro, I have the Canadian pension fund investing in Hyderabad Metro. Where is the Indian pensioners' money? बैंक में बैठा हुआ है, 30 लाख करोड़ अंडे दे रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ LIC में, EPF में लगा के, कुछ नहीं करके। कनाडा से पेंशन फंड आता है, सॉवरेन फंड आता है बाहर से, जायका का पैसा आता है 1.5% इंटरेस्ट पे। क्यों आ रहा है हिमांशु? वो इसीलिए आता है क्योंकि उनको मालूम है 1.5% पे अगर वो दे रहा है आपको तो उसको 5% कम से कम रिटर्न मिलता है। अब जबकि यहीं पे आप ही का पैसा यहाँ पे 9%, 10% रिटर्न मिल सकता है, क्यों हम लोग इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? ये बेवकूफ़ी है। अनलेस दिस चेंजेस, दिस कंट्री विल नॉट मूव फॉरवर्ड एज क्विकली एज इट शुड। सो प्रायोरिटाइजेशन, कम पैसा, आई वुड से बजट में जो है उसका पहली तरह से उसका प्लान कर लो। आउट ऑफ बजट क्या कर सकते हो इनोवेटिवली, वो भी प्लान करो। हमने किया, कॉरपोरेशन से हमारे काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट है जो आउट ऑफ बजट हम करते हैं। PPP मॉडल है, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट PPP में हमने हैदराबाद में किया, 22,000 करोड़ PPP में किया हमने, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है उसमें। तो नया नया इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म करना चाहिए और डेट लेना चाहिए और प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, तभी जाके लोगों को फायदा होगा। One last question. Yeah, good evening, sir. This is Abhishek Chauhan. Abhishek, you have to tell me what do you do about the hair? Pura rock star look. Just got better DNA. That's it. Good for you, man. Okay, I'm an entrepreneur based out of Nasik. I'm a real estate developer. Given you're a new generation politician, what are you and your party doing differently to draw better talent in political life? Basically, that's my question. Better talent in political life. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ए न्यू जेन पॉलिटिशियन, बिकॉज मैं भी बूढ़ा हो गया यार। आजकल जब लोग बोलते हैं 50 साल में भी आप यंग पॉलिटिशियन हो, थोड़ा बुरा लगता है यार। यंग तो 20, 25, 30 तक है, बाद में तो पूरे बूढ़े हैं। बट सी द जनरेशनल शिफ्ट, द न्यू ब्लड, द यंग ब्लड that everybody wants to see in politics, politics of difference, etc., etc. I think that can only come about by two ways. See, I'm a second-gen politician. My father is a politician, so fortunately I've had the launch pad quickly, so I jumped in. And if you didn't know me as a Nepo kid, then you would certainly look at me very differently. I'm sure for those of you who have done some background check, you would already know. But otherwise, Nepo kids are given that look of contempt कि यार ये क्योंकि इसका बाप है तो आ गया ये, otherwise ये कौन है। एक हमारे लिए चैलेंज ये है बॉस की पहली बात ये है कि in India to get into politics, you have to put up with a lot of mediocrity. You have to be prepared for it. So don't come with your rose-tinted glasses कि पूरा दुनिया रंगीन है और बहुत मतलब खूबसूरत लाइन ऑफ वर्क है और इसमें कई सारे अच्छे चीज़ हैं। अच्छे चीज़ तो है, कई सारे हैं, बट काफ़ी सारे बुरे चीज़ भी हैं। So how do I encourage? For example, what I've done in my own team. Ranjit Reddy, Dr. Ranjit Reddy here is an entrepreneur. In fact, before joining, and he's now a